How was the set? Masti 4 का was it very फन था, मजे थे, बहुत सारी हंसी मजाक, बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमने सेट पे शूट करा। How's your family reaction? That is important, you know. My parents are super proud, of course. They are really looking forward to watching me in the film because they have seen me work hard, they have seen me transform, they have seen my emotional journey. You tell me, Abhi, because you will be filled with more scripts after this, and I'm sure right now. घी शक्कर, God bless you, everything. जमीन नाम कर दे, निशांत मेरे 2-3 घर दे दे मुझे इधर बस. Tell me when you were rejected first time. Rejection as such मुझे कभी मतलब लड़कियों से तो फील नहीं हुआ, but professionally of course बहुत सारे देखे हैं. That's part of any actor's journey. कितनी naughty smile है इसकी. I'm not doing anything. It's you. Have you ever proposed somebody in school and anything like that? मुझे याद है the first time I had a crush on somebody was in class 8. She had come for only 1 year and I didn't know that she was a foreign exchange student who had come only for a year. She had come from Malaysia and I really liked her. And the first time in my life I felt those butterflies in my heart for somebody. This was me when I was I think 13, 14 years old. Are you approaching the right people maybe? What is your way मेरी लाइफ में सब कुछ खुद ही होता है. मेरी लाइफ में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अप्रोच किया हो किसी को और कुछ हुआ हो, काम हुआ. How Masti 4 happened? Again, I knew the producers of Masti 4 for 3 years. They were not even producers that time. They were just friends. कब देख रहे हैं हम आपको भंसाली जी के प्रोजेक्ट में? जब होना होगा हो जाएगा. मेरे साथ तो जब होना होता है तभी होता है सब कुछ. मैं एक्टर भी ऐसे ही बना था. मैंने कभी सोचा नहीं था. मैं कलकत्ता में पढ़ाई कर रहा था, मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, किसी ने कार्ड दिया, उस कार्ड देख के इंसान उतर गया. मैंने उस इंसान को बाद में फ़ोन किया, उसने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, उसने बोला पोर्टफोलियो बनाते हैं. मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है पोर्टफोलियो बनाने के. ही सेड मैं बना के देता हूँ, तुम बहुत अच्छा काम करोगे. आई मेड दैट पोर्टफोलियो. आई पेड हिम आफ्टर आई गॉट वर्क. आई बिकेम अ हॉट मॉडल इन कलकत्ता. फिर एलीट मॉडल मैनेजमेंट ने मुझे डिस्कवर किया. वहाँ से मुझे ऑनलाइन किसी ने देखा, फिर मुझे एंडेमॉल ने डिस्कवर किया. फिर मैंने एक लुक टेस्ट दिया, मैं एक एक्टर बन गया, बॉम्बे आ गया. तो मैं आई एम प्रोडक्ट ऑफ डेस्टिनी. देखिए, फिल्म जो है फिलहाल सिनेमा में अलग अलग तरह की मौजूद हैं. वी हैव एम्पल ऑफ ऑप्शंस एंड एक ऐसी फिल्म बहुत जल्द थिएटर्स को हिट करने वाली है और शायद हर घर को भी जो ठहाके हैं सिनेमा के वो अब घर तक भी पहुंचेंगे एंड दे विल बी अ वेरी ह्यूज वर्ड ऑफ माउथ फॉर द फिल्म. आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट. Masti 4 it is. Nishant, welcoming you to Filmy Beat. This is me, Asyadi. Firstly, tell me how Masti 4 are you with this announcement? I'm very happy. Why? Because as a television actor who has been trying to make his space in the film industry, I think Masti 4 gave me that platform where it is like a very good debut with extremely good actors in a franchisee which has been running for almost 20-25 years. Yeah. The best thing about Masti as a series, as a franchisee is that each and every generation knows Masti because Masti 8-9 साल के गैप में एक बार आती है. तो मस्ती 1 मैंने भी देखी थी बचपन में, फिर ग्रैंड मस्ती आई, फिर ग्रेट ग्रैंड मस्ती आई, अब मस्ती 4 आ रही है. तो देयर इज अ वेरी बिग जनरेशन of people from different aspects, different ages that are going to watch this film because of the recall value, because of the nostalgia that they have seen it in their childhood probably. They are all aware of the series. किसी को भी बोलो मस्ती, they know, oh मस्ती, ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती. तो इस तरह की फ्रेंचाइजी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलना and being visible to such a large audience. And उसके बाद हमारी मेहनत होती है. आप जितनी मेहनत करोगे, आप जो डिजर्व करते हो आपको ऑडियंस आपको ड्यू देगी. But to get that stage, I think that's a dream debut for any television actor. So I'm very happy to be here. I've been to Nishant's house first time and we are meeting after almost 2 years, I guess. Probably. 2 साल का gap था. But recently we were discussing about having an interview with each other. Yeah. So finally it's happening and आते घर में निशांत के घर में क्या पॉसिबल हो सकता है? हॉट फोटोज होंगी उसकी बस घर में, बहुत फोटो है लड़के की, बट दैट्स देयर. राम मंदिर नहीं दिखा तुमको? देखा मैंने. जो दरवाजा खुलते ही सामने दिखता है. बगल में तो पहले इधर नजर. हमारा ध्यान पहले मेरी हॉट फोटोज पे गया, राम मंदिर पे नहीं गया. I see hot things first and then the मंदिर, you know. Thank you for the compliment. And दिन में आशा, रात में विपाशा, that is the vibe. But tell me, how flirty are you? Like, what is your way of flirting with people? If I want to be flirty, I can be extremely flirty. But I've taken a conscious decision not to flirt anymore in life because I think I have chosen a different path. I'm trying to work on myself. You're getting on old my also, career. no? You not feel that? Well, do I look old to you? No, of course not. See, I just started flirting in 1 second. I can do it if I need to, but I don't like to. But yeah, on a serious note, I am on a very different journey where I'm working on myself, trying to be the person that I think I am at my core, and
just trying to add value in people's life when I meet them, and not in the way of flirting, but in actual real value. Yeah. By being real friends with people, by being real, making real bonds with people, and yeah, I'm no longer in that zone where I'm looking for anything temporary. No. Even if it's a friendship, the friendship that I would form now would be for life. But do you regret that mistakes which might be there? You cannot regret anything that you've done in the past. You can learn from them. Yeah. Regret is a word that I think इसका कोई logic नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि regret करके होगा क्या? कुछ भी नहीं. You can't change anything. You cannot change your past, but yes, the only decision that you can make is the choice that you're going to make for the future, the present, based on the things you've done in the past. So yes, of course, past में हम सब, we are all products of our past, and we have done things which either have grown us or taught us something. And as long as you are a self-aware person who keeps learning from your own actions by looking at the way life responds to you, I think there is no loss in growing. You keep growing. True. So yeah, I've been doing that. There are many things that I probably would not repeat because I have seen that what impact it creates on other people's lives and on my own life also. So now that is the kind of positivity that I move forward with. Because Masti 4 is a film, you know, that's gonna have all the jokes, all the drama that we know, all the gossips that we boys have, you know, all of that is gonna be there. People drooling over girls, that is there. Everything is there. You know, it's a package. There's no doubt about it. At the same time, you know, what nuances have you picked up from your conversations with when you were a kid, maybe when you were in school? Have you ever like proposed somebody in school and anything like that? And when you were like, ye to bahut hi. Who hasn't? Like, मुझे याद है the first time I had a crush on somebody was in class 8th. And it was a teacher. Don't tell me that. No, it was not a teacher. I'm glad. It was a student in my class, and she had come for only 1 year. And I didn't know that she was a foreign exchange student who had come only for a year. She had come from Malaysia, and I really liked her. And the first time in my life, I felt those butterflies in my heart for somebody. And this was me when I was what? I think 13, 14 years old. So it was. But you must be handsome tab bhi na, to kya hi hua? No, I was a fat kid. Yeah, so I had some insecurities, some inferiority complexes based on the fact that I didn't know how good looking I was. So मेरी पूरी 1 साल I drooled over her, but I did not have the courage to say hello to her. That was that kind of an introvert kid. और 1 साल बाद जब मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट सेशन में तो हेलो बोल ही दूंगा, पता चला वो चली गई. So that हमारी अधूरी कहानी is अधूरी till date. That to Malaysia versus India. हाँ, मतलब I can't go to Malaysia when I was 14 to meet her. Now I have no idea where she is in her. You never tried finding her? I tried searching for her on Facebook when I grew up, and with all the names I could imagine, but could not. Just bad luck. You could just now you can just call the school and ask the details if you want to ever. Who can give me details of a student from 20 years ago? Why would they? I think these are all personal details. Their students are not allowed to get other students' contact details like that. No, you just want to be friends. Privacy thing, no. But schools don't. They have those rules, no? They can't, due to privacy, they can't give out personal details of anybody. But tell me when you were rejected first time. When I was rejected first time. If you were ever. Thank you. But of course, I must have been. Rejected as such हुआ नहीं, क्योंकि होता क्या था कि मैं hardly proposed somebody. Most of the times people have proposed me. But yes, there have been times when I have liked somebody. I have wanted to try to talk to them. But for some reason, things did not come together. तो वो चीज़ dilute होके ख़त्म हो गई. तो ऐसा हुआ है. But rejection as such मुझे कभी, मतलब लड़कियों से तो feel नहीं हुआ. But professionally, of course, बहुत सारे देखे हैं. That's part of any actor's journey. But लड़कियों से नहीं देखा आदि. देखिए naughty smile है इसकी. I'm not doing anything. It's you. You know, but like, oh my God, that's insane. And it's also making me think, have I ever been rejected? And I don't think so. Anyway, yeah, but it's difficult, you know, especially dealing with the rejections. If somebody is rejected in love, oh my God, that's worst. You must have had stories, no? Tell me, you know, Masti is a story of friends as well at the same time. Have you ever gone and, you know, told people about love, given advices like that? You just gave me advice of not marrying somebody, but that's okay. Advice तो मैं देता रहता हूँ because I am somebody who likes to learn a lot from my own life. And I think the best teacher in your life is your life.
अगर आप बहुत आँख खोल के दुनिया को ऑब्जर्व करोगे और खुद को ऑब्जर्व करोगे तो आप सीखते रहोगे बहुत सारी चीज़ें. And then anybody who's coming to that level of evolution, who's coming to that level of maturity that you may have already attained, you can always help out those people. But for that, the only and the most important thing is you need to be unbiased. You need to be somebody who gives an advice from a very neutral point of view. Because the moment you give it from your own point of view, then that advice is not valid. Then it works only for you. Then it doesn't work for the other person. Tell me your advice to the people for love. For love, what kind of advice you need? Any advice, like people, just chasing over the people in love and all that. I think love and fear of loneliness. These are two things that we as people confuse a lot. Most of the times we are with people because we think that हम अकेले नहीं रह सकते, पर ये एक्सेप्ट कोई नहीं करना चाहता. हर कोई बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते हो? The moment you do something for somebody expecting something in return, the moment that expectation comes, it is not love, it's a transaction. तुमने कुछ दिया है, तुमने कुछ मांग लिया. Transaction और प्यार दो अलग चीजें होती हैं. अगर आप सड़क पे कहीं ट्रैवल कर रहे हो, now I know this might sound a very extreme examples and very deep people will understand what I'm going to say now. अगर आप किसी ज़रूरतमंद को देखते हो, किसी जो आपसे भिखारी हो, कोई भी सड़क पे जिसको ज़रूरत हो आपकी, 5 रुपये 10 रुपये 100 रुपये, आप अगर आप देते हो उसको, in that one moment, are you expecting anything back from that person? Of course not. No. Means in that one moment, all you wanted to do was give another soul something because आपका खुद का कुछ नहीं जा रहा था और आपको कुछ चाहिए भी नहीं उससे. Is that not one of the purest forms of love? कि आपने दिया, आपने मांगा कुछ नहीं, ना ही सोचा कि मुझे कुछ मिलेगा क्या इससे. ये तक नहीं सोचा कि वो थैंक यू बोले. आपने दिया, वो चला गया, आपने ये तक नहीं बोला, थैंक यू भी नहीं बोला. अगर आपने ये बोला तो कितने ही घटिया इंसानों खुद ही सोच लो, शैलो हो जाओगे. But any good person who does charity will never want anything in return. Means what? Real happiness is in giving. And love is what? Only giving. So the moment you give something and expect कि यार मैंने इसके लिए ये किया, ये मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता, ये मेरे को मुझे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा एज अ लवर, ये मुझे थैंकफुल भी नहीं हो रहा, ग्रेटफुल भी नहीं हो रहा, देन सॉरी, यू वर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ. तो ये लव और फियर ऑफ लोनलीनेस अगर एडवाइस मांग ही रहे हो तो मैं ये दूंगा कि इन दोनों को हमेशा अलग रखो और अपने आप को देखो कि प्यार कर रहे हो अगर किसी से तो उससे प्यार कर रहे हो कि खुद की कोई जरूरत पूरी करने के लिए उसे प्यार दे रहे हो. इन दोनों बातों को समझो. बहुत फर्क. बट नाउ निशांत नोज ऑल ऑफ दिस. नो, यंग भी तो था लड़का जिसको ये सब नहीं पता था. टेल मी हाउ मैडली वर यू इन लव इफ यू एवर बीन. ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव. आई थिंक आई हैव मोस्टली बीन इन रिलेशनशिप्स आउट ऑफ फियर ऑफ लोनलीनेस. हाँ, मोस्टली ये मैं अभी आज इफ आई लुक बैक, ऑफ कोर्स आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू लव. But I think my reason of getting into a relationship was always fear of loneliness. I needed someone to love me. That's why I was giving so much love. So again, I've realized that probably I was only doing transactions. प्यार नहीं था, and that's why I also got hurt, and the other person also got hurt. मैंने भी कुछ गलतियाँ करी, सामने वालों ने भी करी. तो वहाँ से अगर मैं सीख लूँ चीज़ों को, तो what is the only thing that I need to learn right now? Learn to live alone. This is one thing which all of us know and hear and talk about. We should be independent, we should not need somebody. पर कर कितने पाते हैं actually? It is the biggest struggle for a human being to actually learn to be alone. Alone doesn't mean that आप किसी इंसान से नहीं मिल रहे हो, कोई दोस्त नहीं है, कोई family नहीं है. No, that way, yeah. मन से alone, where you are with everybody, you're doing everything for everyone, but you're not needing someone to make you feel worth. Yeah. You know your worth, and for that you need to learn how to live alone. So now I'm on that journey where I'm trying to learn. But that comes with age, no? It cannot happen overnight. Another advice I'll give you, Adi, now. Age का समझदारी और wisdom से कोई लेना देना नहीं. कोई relationship दूर तक नहीं है. You can be a 15-year-old who's very mature, who's very समझदार. You can be a 50-year-old who's a dumb person who doesn't know anything. You can be 80 and know nothing. आपने जिंदगी भर गलतियां करी, रिपीट करते मर गए एक दिन. तो आप बेवकूफ थे, बेवकूफ मर गए. But you, as you know, one of the handsome actor that we have in Indian cinema, there's no doubt about it. So, how do you bifurcate then? Of course, there must be people approaching you as well, maybe on a date or whatever. So, what is your way of rejecting and bifurcating? I don't reject people when they ask me to go on dates. I go out with them dates. लेकिन ये clear करके जाता हूँ कि मैं दोस्ती करना है. क्योंकि again, दोस्ती सबसे खतरनाक लोग होते हैं ये वाले भाई. हाँ, क्योंकि देखो अब मुझे पता होना चाहिए कि मेरी उस दोस्ती में ईमानदारी कितनी है, कि मैं दोस्ती के लिए कर रहा हूँ कि दोस्ती कुछ प्लेजर्स एंजॉय करने के लिए कर रहा हूँ विदाउट गिविंग एनी कमिटमेंट. वो फिर
थोड़ी सी सेल्फिश चीज़ हो जाती है, मैनिपुलेशन हो जाता है, वो मैं नहीं कर रहा। अगर आपको कोई लाइक करता है, आज मुझे अगर कोई बोलेगा कि आई लाइक यू, तो इसमें तो सिर्फ तारीफ और एक अप्रिसिएशन है ना, तो मेरे लिए खुशी की बात है ना। और अगर वो इंसान की एनर्जी मुझे अच्छी लग रही है, तो आई वुड लाइक टू गेट टू नो देम। Of course. Who are you in the core of you, not what you're trying to show outside. I want to get to know you. I want to understand your emotions. I want to understand your journey. Yeah. Because the more I get to know you, the more we can relate and we can talk and we can learn from each other. True. And I think the best kind of friendships and the only kind of friendships that are real are where you grow together, you teach each other things, you help each other understand things that you have learned from your own experiences and combine them and be there for each other. So I would of course go out with them. I would go out with them with a very good clarity that I am here because I like you. But I'm here to be your friend and I'll be standing with you in your time of need. Even if it is at the cost of my own loss something, I'll be standing with you. But प्यार नहीं कर रहा हूँ, फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ। But if in that phase there are things which can happen, of course not. अगर कोई अच्छा लग जाए, बहुत अच्छा लग जाए और मुझे भी लग रहा हो कि I am fulfilled myself और ये इंसान भी fulfilled है, इसकी भी नीड नहीं है, ये भी मेरे जैसी एनर्जी शेयर कर रहा है, तो उसके साथ अगर एक कंपेनियनशिप हो जाए तो फिर बल्ले बल्ले वो नेचुरली प्रोग्रेशन हो तो ठीक है। बट देयर इज नो प्लेस फॉर क्विक प्लेजर्स, क्विक ग्रेटिफिकेशंस, नथिंग। जो भी चीज़ क्विक होती है ना वो फिजल आउट भी क्विक हो जाती है, लेकिन जो चीज़ धीरे 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 अच्छी दोस्ती, गहरी दोस्ती, गेटिंग टू नो ईच अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, एक बॉन्ड बन जाता है ना, अगर वहाँ पे कुछ प्यार कभी हो जाए मुझे किसी के साथ तो बात अलग, तो आई थिंक वो बहुत ही हेल्दी, नेचुरल और एक बहुत ही ऑर्गेनिक रिलेशनशिप होगा, जो कि आई विल ऑफ कोर्स स्टैंड विद। आई विल बी वेरी हैप्पी, लकी टू हैव समथिंग लाइक दैट। How are you with people? Like, are you a people's person or you are somebody who likes to not meet a lot of people and be in your own zone and spend time with yourself? Both, Adi. Actually, I have days when I'm an introvert, where I only need my friends and I'm there for them. When we just sit and talk and just share good vibes. But then there are days when I'm in the mood, which are actually relatively fewer days are like that, where I want to go out, be social, meet new people, get to know new people. कौन क्या बोल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना बड़ा अच्छा लगता है। आई एंजॉय द फैक्ट दैट हम लोग सब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं दुनिया के सामने, बिकॉज हमें लगता है कि वो हमारे लिए दैट इज व्हाट वर्क्स फॉर अस। बट एक्चुअली इंटरनल बैटल्स जो सबकी हैं, जो सब छुपा रहे हैं, लेकिन अगर आप समझ लो, of course, and the moment you understand somebody's internal battles, that person starts feeling very good and comfortable around you, because we all want someone to understand us. True. So I like to be that person for other people जिसको वो समझ पा रहा है, so that people feel lighter. And see, I think the only contribution of yours in this world, in this life, is how you make others feel. If you make someone feel good now, I think there's nothing better that you can gift another human being. Just make them feel good. Just understand what they're going through. Understanding में ही नहीं होता कि solution देना जरूरी है। Of course, just अगर तुमने आज आधी टूर में अगर बैठ के बातें करें ऑफ कैमरा, and you share any kind of pain of your life, because I'm sure we all have. Everybody's fighting a battle that nobody knows about. So if you share a single thing with me and I understand that, I don't give you solutions. I hear you, I listen to you, and I actually understand, not on the surface level. I feel it. Your pain will reduce a little bit. यही चाहिए होता है कि कोई सुन ले, कोई समझ ले। सोल्यूशन तो हम ढूंढ लेंगे, वो तो अपनी अपनी लाइफ है, बल्कि मैं दूंगा तो भी तू नहीं मानेगा, तू करेगा भी तो तेरे को करना है। ऑफ कोर्स, हाँ, लेकिन कोई समझ ले तेरा पेन, इससे कितना अच्छा लगता है, मजा आता है कि यार कोई एक इंसान मिला जिसने मेरे को सुना और समझा। बस। But what are your internal battles that you have faced and overcome? I think अभी उसी के बारे में मैं काफी देर से बात कर रहा था कि I've been always in relationships due to fear of that was the only aspect to it. Maybe career wise I wanted to know. Career wise तो मैं अभी आ सकता हूँ, but I think प्रोफेशनल बैटल्स तो खैर प्रोफेशनल होती हैं, वो सरफेस लेवल बैटल्स होती हैं, बट रियल बैटल्स आर द वंस वेयर यू आर अंडरस्टैंडिंग द मैटर्स ऑफ योर ओन हार्ट। तो वो मैंने शेयर कर लिया, आई हैव टोल्ड यू, दैट इज वन मेजर थिंग दैट आई हैव शेयर्ड विद यू। बट अदरवाइज येस, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 15 years. आई हैव बीन वन ऑफ दोज ब्लेस्ड एक्टर्स हु एट द एज ऑफ 21, 22 started as a hero. I'm at 38, I'm still a hero. And I plan to remain a hero till the age of 55, 60 also. Because I know this might sound pompous, but I kid you not, I'm not trying to be pompous here. But I know how hard I work and how blessed I am to have the right teachers, have the right guides in my life. So I am very blessed to have such good energy around me that it reflects in my external self. So
despite all that, I still think that as an actor, there is a lot that I can achieve. There is a lot that I can get The due is for still my there. due. You know? I have been getting a lot of love from the audience, from producers, but एक वो moment आता है जहाँ आपको लगता है कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ, ये सब जानते हैं. मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, मैं कितनी अच्छी बॉडी बना लेता हूँ, डांस कर लेता हूँ, ओके, नॉट अ बिग डील. मैं एक्टर कितना अच्छा हूँ, जो एक कैरेक्टर को, एक इंसान को, जो एक पेपर पे किसी ने लिखा है, उसको अपने अंदर इस तरह से उतार लेता हूँ कि मैं वो बन जाता हूँ. Like how Akshay Khanna is. Yeah. He's not into Instagram, abs, body, dance, कुछ नहीं. But when he comes on screen, if you don't know it's Akshay Khanna, you will not know it's Akshay Khanna. True. Look at him in Chhawa. Yeah. Look at him in Dhurandhar and all these films that are coming up, जैसे दिख रहे हैं. So उस तरह का एक जो एक आपको पता ना कि आप, even if you're not the hero, you're not the Ranveer Singh of Dhurandhar, but Akshay Khanna in a single film in Dhurandhar, people say, अरे Akshay Khanna आ रहा है. क्योंकि पता है वो आएगा तो आग लगा देगा. He's an actor who will make you believe in the character. That kind of respect I want. तो वो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ. And उसके लिए like are you approaching the right people maybe? What is your way मेरी of? लाइफ में सब कुछ खुद ही होता है. मेरी लाइफ में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अप्रोच किया हो किसी को और कुछ हुआ हो, काम हुआ हो. How Masti 4 happened? Again, I knew the producers of Masti 4 for 3 years. They were not even producers that time. They were just friends. And slowly, while we were friends, we were just connecting, we were bonding, like how I told you how friends are. Yeah. I was being that friend because I believe that friendship is a very responsible term. So without expecting anything, I was there for them and we were just chilling, hanging out, sharing life experiences, sharing pains, sharing whatever, you know, a little bit of ups and downs that we all face as humans. They slowly, somehow they got into film production business. And one fine day they came up to me and they said, "Arey, we have decided to produce Masti 4. And in that we want you for this character," because when the script came from Milab Zaveri and they read it, they saw that this character is somebody that I can look like very easily. And they had also seen my work, so they knew that I'm a very good actor. Yeah. So ये जो comedy character with this hotness था, this combination, they themselves felt that I deserve it. So I got it. And then this is 1.5 years ago, before Masti actually went on floors. In those 1.5 years, they had promised me that we are giving you this role. I said, okay. But in that 1.5 years, I had a personal upheaval in life, personal emotional upheaval, because of which I think I was at the lowest in my mental state. I was at my lowest in my physical state. I gained a lot of weight. I became fat. I started looking old. I had gray hair. You know, and that's what stress does to you. When you're a very emotional person, you hold on to things very hard, and those things also hold on to you. So I still remember 14th of May is when they called me to the office. I went. It's on my Instagram. There is a video of my transformation. So you can see how I was looking before. So the before is when I went to the office of these people. And they told me that, Nishant, 50 days later, today's 14th of May, 1st July, we're going on floors in the UK. So it's 45 days. Tomorrow 5 दिन बाद है, तो 50 days for you. We're going on floors. Now, the greatness of these people, the producers of Masti 4, Wave Band Productions, is that because they had promised me this role 1.5 years ago, even though I looked like a loser who could not deserve this role. मैं सच बता रहा हूँ, आदि अगर मैं प्रोड्यूसर होता और मेरे सामने मैं खड़ा होता उस वक्त का और ये कैरेक्टर होता, मैं खुद को नहीं देता. But because they had promised me this, they said, "You're doing it." They did not even tell me कि यार तू कुछ काम कर. They just said कि देख तू थोड़ा ना जड्डा सा हो गया. That's the word he said. देख भाई तू जड्डा सा हो गया. You're doing it, but थोड़ा काम कर, lean हो जा बस थोड़ा सा. And we're going 45 days, 50 days later. Now, Ari, suddenly it hit me that एक एक्टर के लिए इससे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि आप मस्ती 4 में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय, आफ्ताब शिवदासानी के साथ as good as them with Tushar Kapoor, Arshad Varsi, as good as them, you're standing shoulder to shoulder and you have a chance to prove yourself in front of millions of audience. ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा. तो तू कैसा लग रहा है यार? क्यों हार गया इतना? This is not you. This is not Nishant. Nishant is a winner. He's a tiger. अभी भूल गया कि तू क्या कर रहा था 1.5 साल से ना. Change. It's time to just do it. Just do it. 48 days,
from a loser to a winner. That journey is again on my Instagram. You can see. In 50 days, I have lived that film. I have worked on my body. I have worked on my script. I have worked on each and every aspect of my physical, my external and my internal self. Sleeping at 10 in the night, waking up at 6 in the morning, working out twice a day, 2.5 hours each time, eating every meal at the right time, getting scientifically trained by the best coach that I could find. Everything correct. And the result on 21st of November, when the film releases. I want you to tell me when you see that film, because I'm sure you'll be invited. You have to see it. When you see that film and when you see what I have done, please tell me. Because I'm telling you, I have literally, again, at the risk of sounding pompous, I have risen from ashes like a phoenix. I have risen from my own ashes. And I'm proud of myself. Because if in 50 days I can come from there till here, I can do anything. Yeah, of course that's true. But you tell me, Abhi, because you will be filled with more scripts after this, and I'm sure right now घी शक्कर, God bless you, everything. जमीन नाम कर दे, निशांत मेरे 2-3 घर दे दे मुझे इधर, बस मैं ये daily you keep me. I have a friend, and he likes when somebody praises him a lot, and that helps because that's a manifestation. Everybody loves it, yeah. So I'm like, you'll do someday. I feel like you'll keep a guy just praising you all time, so I can be that for you. वो नहीं चाहिए मुझे, फेक किसी नहीं को यार, नहीं मैं चाहिए, फेक नहीं करता, अच्छी करूंगा, सच्ची करूंगा. सच्ची करना, अच्छी मत करना, सच्ची करना. नहीं सच्ची है ना. अच्छे दोस्त वही होते हैं जो सच बोलते हैं, इवन इफ इट इज कड़वा. तभी तो इम्प्रूव करता है कोई. कब देख रहे हैं हम आपको भंसाली जी के प्रोजेक्ट में? जब होना होगा हो जाएगा. मेरे साथ तो जब होना होता है तभी होता है सब कुछ. ऐसे थोड़ी ना, कुछ सीरियसली मैं एक्टर भी ऐसे ही बना था. मैंने कभी सोचा नहीं था. मैं कलकत्ता में पढ़ाई कर रहा था, मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, किसी ने कार्ड दिया, उस कार्ड देख के इंसान उतर गया. मैंने उस इंसान को बाद में फ़ोन किया, उसने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, उसने बोला पोर्टफोलियो बनाते हैं. मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है पोर्टफोलियो बनाने के. ही सेड मैं बना के देता हूँ, तुम बहुत अच्छा काम करोगे. आई मेड दैट पोर्टफोलियो. आई पेड हिम आफ्टर आई गॉट वर्क. ही सेड आप बाद में काम करके पैसे दे देना, बट आई कैन सी दैट यू कैन डू वेरी वेल. आई बिकेम अ हॉट मॉडल इन कलकत्ता. फिर एलीट मॉडल मैनेजमेंट ने मुझे डिस्कवर किया, वहाँ से मुझे ऑनलाइन किसी ने देखा, फिर मुझे एंडेमॉल ने डिस्कवर किया, फिर मैंने एक लुक टेस्ट दिया, मैं एक्टर बन गया, बॉम्बे आ गया. तो मैं आई एम प्रोडक्ट ऑफ डेस्टिनी. तो मेरे साथ लिटरली आई बिलीव गॉड, I'm like a small child. And we all are. For God, we are all small children. Now imagine yourself with a small child holding God's hand and walking. Okay. Now God knows that you're supposed to go there because that is the best destination for you. But what does a child do? मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहाँ भी जाना है, मेरे को इधर भी जाना है. What does God do? नहीं. Like a father, like a parent. नहीं, तुम्हें वहाँ जाना है. तो जब वो God खींचता है वापस, तो आपको लगता है कि मेरे को वहाँ जाना था, मैं जा नहीं पाया, मैं हार गया. But actually में God आपको वहाँ लेके जा रहा है. वो सुप्रीम पावर, गॉड, राम, जिसका जो नाम लेना, अल्लाह, जो बोलना बोलो, गॉड आपको वहाँ लेके जा रहा है जहाँ आपको जाना था, अकॉर्डिंग टू हिम, विच इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू. यू विल बी हैप्पीएस्ट देयर. आई लिटरली फील आई एम दैट किड. वो हाथ पकड़ा हुआ है मुझे. तो मेरे साथ जो नहीं होता है वो हमेशा मेरे लिए अच्छा होता है. और इसके एक नहीं, इन्यूमरेबल एक्सपीरियंसेस है मेरे पास. जो मेरे साथ नहीं हुआ है, वो भले ही मैं रोया हूँ बच्चे की तरह कि क्यों नहीं हुआ है, मेरी जिद थी. वो जिद मेरी नहीं, मेरी ईगो की थी कि मुझे क्यों नहीं मिलेगी. बट अगर वो मिल गया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता. वो कोई इंसान हो या कोई काम हो, अगर वो इंसान या वो काम मिल गया होता तो आज मैं यहाँ इस पोजीशन में होता जो खुशी में फील कर रहा हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ, जो पॉसिबिलिटीज अब मैं देख रहा हूँ अपने लिए. तो ये खुद को याद दिलाना पड़ता है. दैट इज द जर्नी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, टू हैव फेथ. फेथ क्या होता है? यही कि नहीं मिल रहा जो चाहिए, बट हैव फेथ कि वो मिलेगा जो तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे लिए अच्छा है. बट फिर भी इच्छा तो होगी ना. इच्छा रखने में क्या गुनाह है? तो कुछ इच्छाएं जाहिर कीजिए आप. Who all directors you would love to work? Don't say all or no. No, of course. Like you said, Bhansali ji, definitely. Dharma Production, Karan Johar, of course. Balaji तो खैर producers हमारी मस्ती में भी हैं. But I would like to do a film which is being produced by Balaji. I would like to work with Maddock. I would like to work with Excel. Like, I would like to work with Yash Raj. खत्म, अभी क्या बाकी है यार? जितने भी हैं, मतलब my dream is to work with all of them because why? They can provide me the platform and the scripts where I can prove myself as an actor. That's there. I don't know why today, but when I'm looking at you constantly, he's bit giving me Arjun Kapoor handsome version vibes. I don't know I should say that or not, but I have said it. No, but yeah, I understand. Thank you. Have you ever like thought of कि you look like with someone like? मुझे रणबीर कपूर से बहुत पहले किया जाता था. When I was like absolutely new. और अभी भी कभी-कभी हो जाता है in certain looks. But a handsome Arjun Kapoor
I think Arjun Kapoor is also handsome. Yeah, of course he's very handsome. He's gonna kill me. I hate the fact that how people troll him. I don't think any human being. I'm not trolling the social media. Yeah, no, I'm just saying. Yeah. He is a very good human being, and everybody is a good human being, of course. He probably isn't just fortunate enough to be able to show that in the right films. But I hope one day he gets a comeback and see how Bobby Deol is now Lord Bobby. Of course. Nobody could imagine Bobby Deol will be Lord Bobby. एंड ऐसे लोगों को देख के ना खुशी होती है. हर्षवर्धन रानी को देख के खुशी होती है. इतनी मेहनत करी, इतनी स्ट्रगल करी, आउटसाइडर था, एक चलो कोई स्टार किड नहीं था, फैमिली कनेक्शन नहीं थे. इनको देख के ये बिलीफ आता है कि ऑडियंस अब एक टैलेंटेड एक्टर को स्टार बनाती है. पहले शायद सिर्फ फिल्म स्टार्स के बच्चों को और कपूर खान को ही बनाती थी. अब हम जैसों के लिए भी मौका है. इफ यू डिजर्व इट यू मे गेट इट. तो अच्छा लगता है. How was the set, मस्ती 4 का? Was it very fun था? मजे थे. हाँ. All fun, all gossip. All fun, हंसी मजाक, गॉसिप नहीं, हंसी मजाक, जोक्स. क्योंकि क्या था, जब आप एक कॉमेडी फिल्म शूट करते हो ना, तो every actor while performing the scene has some kind of improvisation, some kind of ideas. Of course. And sometimes they are very funny, because it's spur of the moment, impromptu, impulsive things. तो बहुत सारी हंसी मजाक, बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमने सेट पे शूट करा. बहुत मजे आते थे. And how's your family reaction? That is important, My parents are super proud, of course, and see. They've been proud, of course, that they know that you've been working. Yes. And they also are aware that Masti is an adult comedy, but it's a respected franchisee. जो भी बोले, it's a very respected franchisee, and they are really looking forward to watching me in the film because they have seen me work hard, they have seen me transform, they have seen my emotional journey. I have not just shed tears, but I've also shed my blood, I've also shed my sweat, everything to become who I am today, to be a part of that film. Also because when these producers showed faith in me, despite me not having faith in myself, I had to live up to their faith. I had to prove it to myself that उन्होंने जब मुझ में विश्वास किया है, तो उनका विश्वास वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए. They should not ever feel कि हमने एक दोस्त को काम दिया. They should always feel कि we gave it to the actor, जिससे अच्छा ये रोल कोई और कर ही नहीं सकता था. बिल्कुल, that's there. Last time taking, while you've been in TV from very long. 15 years. है ना? कमाल ही, मतलब कि इतना तो. हाँ, मतलब बीच में 8 साल तो I was absolutely गायब, गुमनाम, because 2010 में मेरा पहला शो आया था राम मिलाई जोड़ी, which was my solo main lead. उसके पहले मैंने मिले जब हम तुम किया था. वो पैरेलल लीड या सेकंड लीड बोल सकते हैं. वो शॉर्टर अमाउंट ऑफ कॉन्वर्सेशन था. तो 2010 के बाद I decided to do films. I was a 22-year-old kid. A little bit of success got to my head. मुझे लगा नहीं, मैं तो इतना जल्दी फेम मिल गया तो मैं ये क्यों करूँ, मैं तो वो करूँगा, मैं फिल्म करूँगा. तो But fans of TV are much loyal than the. हाँ, उस जर्नी के आज भी हैं जिन्होंने मुझे प्यार दिया था. बट 2010 से 18 8 साल मेरे पास काम नहीं था. 8 साल मैंने सिर्फ साल में कोई एक छोटी पिक्चर मिल गई, एपिसोडिक्स कर लिए, मतलब किचन चल जाता था, उतना काम हो जाता था. लेकिन वो भी एक अलग जर्नी, एक अलग स्ट्रेस और एक अलग डेस्परेशन थी मेरी कि व्हाई एम आई नॉट रीचिंग वेयर आई वांट टू रीच अगेन दैट मोमेंट. मुझे वहाँ जाना है. गॉड वाज लाइक नहीं जाना, अभी टाइम नहीं है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है. क्योंकि अगर गलत वक्त पे सक्सेस मिल जाए ना तो वो डिस्ट्रॉय कर देती है. सो दैट्स व्हाई आई डिडंट गेट इट. तो अभी बजट आई गेस 2018 से देख लो. 2018 से मेरा करियर अभी एक अच्छे ग्राफ पे चल रहा है. नहीं, पहले भी था ही निशान. पूरा 8 साल नहीं था बीच में. सच है, जो फैक्ट है. Nobody cared. Nobody wanted me. But was it difficult for you to handle? Of course. Emotionally very much, because उस टाइम तो आपका मन, आपकी ईगो ये रो रही होती है ना कि यार मुझे क्यों सडनली रिजेक्शन मिल रही है. क्योंकि आपकी चॉइसेस गलत है, आपकी खुद की एनर्जी गलत है, आपके खुद के डिसीजंस गलत थे. पर वो सीखना पड़ता है. एंड लाइफ सिखाती ऐसे ही है ना. Suffering is the best friend that teaches you to grow. Like आप जिम जाते हो अगर, या कोई भी काम करते हो, आज तुम अपना करियर बना रहे हो, यू आर अ वंडरफुल पॉपुलर होस्ट. इसके लिए तुम पूरा दिन भर भागते हो, 10 इंटरव्यूज लेते हो, थकान होती है, भूख भी लगती होगी, प्यास भी लगती होगी, पैरों में भी दर्द होता होगा, पर जाना पड़ता है. क्यों? सफरिंग हो रही है ना. उससे क्या मिल रहा है? ग्रोथ. जिम में जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, क्या करते हैं? मसल तोड़ते हैं ना. पंप क्या होता है? जब अगले दिन दर्द होता है ना बॉडी में, वो क्या होता है? आपने खुद को तोड़ा, तभी वो और स्ट्रांग बना. उसी तरह जिंदगी भी आपको तोड़ती है ताकि आप और स्ट्रांग बनो. तो ये याद रखना बहुत जरूरी है. I feel like I've come to a therapy, but it's good. Don't cry. No, not You're teary-eyed. No, but budget is not the discussion for you for the films right now, is what I feel, because. What do you mean budget? Huh? Budget मतलब? For the films, like if there are films that are there, budget is not something you're gonna reject a project for.
No, of course not. I will है ना? not That's what I'm reject saying, anything for money. Money is just money. Yeah. It'll come and go on its own. Yeah. Money, पैसे उतनी ज़रूरी होते हैं जितनी गाड़ी में पेट्रोल. अब तुम्हारे पास एक गाड़ी है, उसका पेट्रोल है 50 लीटर का, तुम उसे भर लो. Of course, of course. उसके बाद तुम्हारे पास अगर 6 टैंकर खड़े होंगे ना पेट्रोल के, वो किसी काम के नहीं है. Of course. तुम्हारी जिंदगी चलेगी उस 50 पे. वो खड़े हैं, वो तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि अरे 5 टैंकर है पेट्रोल के, पर वो वेस्ट हो रहे हैं, वो पड़े हैं. सो मनी इज लाइक दैट. इफ यू हैव इनफ, know you're enough first of all. If you have enough, be happy, enjoy, live your money. Don't leave your money. Yeah. बूढ़े होके मर जाएंगे और 100 करोड़ किसी और के लिए छोड़ देंगे, फिर क्या करोगे? Live your money. Don't leave it. Enjoy your life. आज सैक्रिफाइस कर रहे हो, आज नहीं खा रहे हो, आज नहीं जी रहे हो, आज नहीं कुछ खरीद रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं बुढ़ा रिटायरमेंट में. अबे जिंदा रहोगे, कोई गारंटी है 50 की एज में? किसके पास है गारंटी? और 50 होने के बाद अगर हॉस्पिटल में पड़े रहोगे तो क्या करोगे उस 50 करोड़ का जो बैंक में पड़ा? इससे अच्छा आज जियो. आज जब हाथ पैर चल रहे हैं, यूथ है, एनर्जी है, तो एंजॉय द वर्ल्ड, ट्रैवल द वर्ल्ड, एक्सपीरियंसेस लो लाइफ में. जो अच्छा लगता है वो खाओ, जो अच्छा लगता है वो खरीदो, जो अच्छा लगता है वो पहनो, खुशी लो. और किस लिए आए हो जीवन में? खुशी इकट्ठी करने के लिए, विदाउट एंजॉयिंग इट. ये तो स्टुपिडिटी है ना, आयरनी है. But I guess सिनेमा में तो फन आने वाला है. There's no doubt about it. Last your message to people, of course. People have loved you over the years, there's no doubt about it, and they're still constantly showering the love to you, and I see that, you know. So your message to your people for the theaters. My message for the people is that you have been loving me in all my television shows. You have loved me even when I was not doing great, but now my film is coming and it's a dream debut for me. So please go to the theaters, buy tickets, shower your love, spread the word, and make reels and share them on Instagram so that I get more opportunities to do better films, to do more beautiful characters and entertain you. Thank you.